Good evening, students. I am your teacher, Hemlata Ma'am, and today we are going to study and understand about the morphology of flowering plant. This is the chapter 5 of class 11 biology, and we are going to understand the current syllabus which is given in the NCERT and CBSE. And I'm sharing the screen with you. We will be studying about the root, stem, and also the leaf. Afterwards, we will be studying about the flowers. So this we are going to study in the morphology of flowering plants. With this, we also will learn about what is the difference between the different types of flowers on the basis of their symmetry, on the basis of their uh, floral parts, attachments, arrangements, and we will also understand about what are the types of flowers on the basis of their reproductive parts, and what about their relation with the ovary, how at what position they are with respect to the ovary. We will be studying that also. So now we are going to understand about the starting that what is morphology. Basically, the study of morphology is the study of external parts and their arrangement in any organism. Whichever organism we are reading, whether we are reading a plant, then we will going to observe, and our focus is on that what are the its body parts, the plant body parts, and how are they arranged, and underground parts and the above ground parts. These we are going to understand in the plants. If we study about animals, as you can see, that to study what is the shape of the organism, what is the external features, what is the parts of the organism, how they are arranged, in what pattern. This means the morphology in respect to the animals also. Whatever we are, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट दिखा रखी है, तो ये भी एक तरह की मॉर्फोलॉजी हो गई, क्योंकि ओवरी एक पार्ट होता है फ्लावर का जो फ्रूट में मेच्योर होता है, उसके अंदर बीज बनते हैं. बीज कैसे अरेंज है, बाकी सारे बीजों से उसकी अरेंजमेंट कैसी है, ये भी किसमें आता है. टाइप ऑफ प्लासेंटेशन ऑल्सो कम इन द मॉर्फोलॉजी. तो पेराइटल में आप देख सकते हैं कि द टाइप्स ऑफ द seeds are present in the inner wall of the ovary or on the peripheral part. Mustard and argemonics example. Free central में you can see there is inside the center without any without any wall. The ovary is not divided in the wall. It is septa are absent in free central. And this is found in the dianthus, primrose. Basal presentation में आप देख सकते हो single ovule at the base of the ovary. And what about marginal in the peas? Like in the peas, मटर में आप देखते हो एक margin में seeds लगे रहते हैं. Exile, when the placenta is axial and the ovules are attached to it in the multilocular ovary. China rose, tomato, lemon. जब आप लेमन को काटोगे आपको इस तरह से multilocular की ओवरी दिखेगी, उसमें आपको सीड्स दिखेंगे, वो भी एक्सिस पे. तो ये गाइनोशियम यानी कि फ्लावर का फीमेल पार्ट. देन एंड्रोशियम यानी कि फ्लावर के स्टेमन पार्ट. द एस्टिवेशन के पेटल्स कैसे अरेंज्ड हैं. कोरोला, दैट मीन्स पेटल्स ऑफ ब्राइटली कलर्ड इन द डिफरेंट फ्लावर. केलिक्स, दैट मीन्स the green leafy parts which are present in the lower portion in the outermost wall. What are the ovaries with respect to the other we can say parts on the receptacle thalamus? How the ovary is arranged is the three types of flower can be hypogynous, in which the ovaries are superior, terigynous, in which the ovaries are half inferior, and like in plum, rose, and peach, and in epigynous the ovaries are inferior. Margin of the thalamus grow upward, and this is found in guava. So inferior ovary is found, epigynous ovary is found in the guava. And the types of flower which I was saying on the basis of the symmetry, there are two types of flower, actinomorphic and zygomorphic. You can see actinomorphic is the radial flower in which the flower parts are arranged in the radius, and then it is zygomorphic, that means bilateral.
So two types of the flowers are on the basis of the symmetry, and then the flower can be unisexual, bisexual on the basis of the reproductive parts, and trimerous and other on the basis of how many parts are present in the um, how many parts and in what multiples are they present in the flower. Three, then it is trimerous. Four, then there is tetramerous, and five, then it is pentamerous. So these are the conditions in which we can classify the flowers on the basis of various characteristics. There are various ways in which we can classify the flowers like this. And coming to the next is we have to classify the flower on the basis of male parts also. And what is stem, what is root, that also we have to study. Not the modification we have to study because that are deleted from the syllabus. So primary root is also found as a tap root in the dicot plants. So in the dicot plants, the primary root is developed straight in the ground and it goes in the ground uh, deep, and it also produces its lateral branches. So इस वजह से उसको टैप रूट बोलते हैं, क्योंकि जैसे हम नल ओपन करते हैं तो पानी बिल्कुल सीधा धार में चलता है, ऐसे ही ये रूट है, ये रेडिकल से निकलती है और ये सीधा धार में चलती है नीचे की तरफ, और इससे थोड़ी थोड़ी और ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तो ऐसी रूट हमें डाइकॉट प्लांट्स में ज्यादा मिलती हैं। तो दीज आर टैप रूट सिस्टम। और अगर इसमें टैप रूट ना मिले, रेडिकल से डायरेक्टली फाइबर जैसी रूट मिले, बहुत सारे धागे जैसी, तो वो हो जाता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम तब होता है जब हमारे रूट कहीं और भी किसी भी पार्ट से निकल जाती है, जैसे कि स्टेम, या फिर बैनियन ट्री में आपने बरगद के पेड़ में देखा है कि ऊपर की ब्रांचेस से रूट्स निकली रहती हैं। एंकरेज, फंक्शन ऑफ रूट क्या क्या है कि रूट्स हमेशा एंकर करती हैं पौधे को, मिट्टी में गाड़ कर रखती हैं एक जगह पर, क्योंकि पौधे चलते नहीं है, तो पौधे एक ही जगह पर किसकी वजह से होते हैं, जड़ों की वजह से। तो ये रूट्स का वर्क है कि पौधे को एक जगह पर रखना। वहीं पर अगर हम स्टेम की बात करेंगे, वहां उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए रूट के कितने रीजन हैं। तो रूट के रीजन कितने हैं आप डायग्राम में देख रहे हो, सबसे नीचे वाला रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में उसके सेल्स बहुत ज्यादा फाइन है, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप भी है। तो रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कवर करके रखता है, उसे बचा कर रखता है। एंड दिस रूट कैप रीजन इज प्रेजेंट हेयर। एंड उसके बाद जस्ट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। इससे प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इसके सेल्स हमेशा लेंथ में बढ़ते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी नए नए सेल्स बनते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब ये है, इन सेल्स की लेंथ बड़ी होती है रीजन ऑफ इलोंगेशन में, और ये सेल्स मैच्योर होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। तो इस तरह से रूट के आपके पास तीन रीजन होते हैं। रूट रीजन ऑफ मैचुरेशन हम पहचान सकते हैं थ्रू रूट हेयर्स। जिस रीजन में रूट हेयर्स होंगे उसमें रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा। स्टेम, स्टेम कैसे डेवलप होती है, द अबव ग्राउंड पार्ट इज कॉल्ड स्टेम, एंड स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम की पहचान है कि उसके अंदर नोड्स होंगी, इंटरनोड्स होंगी, एंड स्टेम के अंदर लीव्स आएंगे, और उसके अंदर ब्रांचेस आएंगी नई नई। वो बड्स भी रखेगा, बड्स रख के, और वो टर्मिनल और फ्रूट्स भी
Leaf originate from the shoot apical meristem and arrange in an एक्रोपेटल ऑर्डर, मतलब नीचे के लीव्स पुराने लीव्स होंगे और नए नए लीव जो आएंगे वो ऊपर की तरफ आते हैं। इसको एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। इस तरह से लीफ अरेंज होते हैं। लीफ के पार्ट्स आपको पता है, लीफ का बेस होता है और लीफ की वेन्स भी होती हैं जो उसमें पानी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। लीफ का जो फ्लैट पोर्शन होता है वो लेमिना होता है। कभी कभी लीफ बेस से एक एक्सिल में बड भी निकल सकती है जिसे एक्सिलरी बड कहते हैं। लीफ कंपाउंड लीफ भी हो सकते हैं, यानी मेन लीफ लेमिना उसका डिवाइडेड हो सकता है स्मॉल लीफलेट्स में, तो उसे कंपाउंड लीव्स बोला जाता है। और लीफ अगर कंप्लीट होता है सिंपल लीफ बोला जाता है। उसका लेमिना अगर कंप्लीट होता है, ब्रेक नहीं हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के लीफ हो गए। And phyllotaxy is the arrangement of the leaves on the stem. So there are different types of phyllotaxy, which are alternate, opposite, and whorled. You are looking at these diagrams. Alternate, that one leaf will arise on one node and on one side, and then on other side alternatively. So that is called alternate phyllotaxy. And opposite is that from each node two leaves will be arising, and spiral and whorled, in whorled from each node many leaves will arise, and that will be arranged in a circular arrangement. So that is called whorled phyllotaxy. I hope आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है. So these were the main parts in the fruits, and then the seed is having cotyledons. Then if two cotyledons are present, then the seed is called dicot plant and the plant is called dicot. If one cotyledon is present, then it's called monocot. डाइकॉट में सेंटर में एम्ब्रियो है, आप देख सकते हैं. प्लम्यूल region is the region which will produce primary stem, and the lower region is the root region radicle which will produce the root. And in the monocot there is a single cotyledon called scutellum, and there is the structure is like the downward corn seed is shown. There is a embryo in the corn seed which is having the stem cap called coleoptile and the root cap called coleorhizae, and endosperm is also present in the maize seed, which is acting as a reserve food material. And corn seed is the example of monocot seed, whereas the bean seed shown next to it is a example of a dicot seed shown in that side, because it is having two cotyledons. Now we are heading toward the fruit family Solanaceae, and the food is there. Fruit is there. Fruit is the ripened ovary, and fleshy fruits are there. Mango and coconut fruit is known as a drupe fruit, and some fruits which are formed without fertilization you can see are called the parthenocarpic fruit. So parthenocarpic fruit and pericarp is there. Pericarp is divided into epicarp, outermost, middle, mesocarp, and endocarp. Mango and coconut, they are called drupes fruit. Now, Solanaceae is very important. Only one family is given. Vegetative characters are given. Floral characters and floral formula is given. So I want you to have a screenshot of this. This is also important, economic importance, and there are question and answers which are also given here. You can see such type of question, you can practice it. So with this, I want to end my lecture here. I hope you have understood this. Thank you for patiently listening to me. And if you have liked the video, then share and subscribe my video. Thank you.